This is the first video that I'm posting for YouTube or I'm creating for YouTube. So from past 1 month, I've been posting reels, I've been posting content for YouTube shorts. मतलब shorts के लिए तो भी recently start किया है, but majorly I've been creating content for Instagram and then I started for Facebook and now I have recently started posting content for YouTube, mostly shorts. But this is the first video that I'm posting for YouTube. I've recently created a channel on Instagram. The name of the channel is Positive Vibes Only by Ritwik. So the question is why I have started this channel and what is the idea behind creating this channel, and especially in the ages when people are mostly creating entertainment content. While I know that there are a lot of creators who are already creating content on positivity and everything, but if I look at around myself, I mean, I have observed that it is very important in today's world that, and in fact, I have eventually realized that it is very important for you to make sure that your mind or your brain is working fine. And that is very rare these days. I mean, why this is rare? Because obviously, इतना ज़्यादा pressure है काम का. If you are working in corporate, obviously you will feel that there is a lot of pressure. And at the same point of time, there are a lot of responsibilities that you need to take care of. चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स कम विद इन द फैमिली itself, but specifically I've seen people who really care about a lot about their growth, about their life, whether they are actually taking care of their parents or not. In case if they have recently get married, whether they are taking care of their partner or not. अगर वो recently parents बने तो whether they are taking care of their kids or not. So बट वन थिंग आई हैव रियलाइज दैट अगर आपका माइंड, आपका ब्रेन अगर सही से फंक्शन कर रहा है, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ. एंड आई हैव रियलाइज दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, especially when I have joined corporate. I mean, it's been almost more than 6 years that I'm working in corporate, and I have eventually realized that most successful men, most successful people, not just men, but most successful people, their mind is working so sharp, their mind is working so fine that whatever they are doing, they are doing it with full perfection. Even if it's not perfection, at least they dare to do things differently. And that is very important. But I used to think, I mean, how exactly these successful people used to think, how they are dealing with situations. And I'm very sure कि जो successful लोग होते हैं उनके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी situations आती हैं, बहुत सारे ऐसे tough points आते हैं. And at the same point of time, it is very important how they are dealing with those situations. So I used to think कि ये लोग कैसे करते हैं. Because when I joined my first company, I won't take the name, but it was hardcore sales and I am into sales. So it was hardcore sales. And you know what? I have realized one thing in sales, that how your mindset plays a very important role in achieving targets. और ये जो कहते हैं कि सेल्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, कैसे आता है, और अगर नहीं है तो कैसे उसको लाया जा सकता है उस कॉन्फिडेंस को. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ फ्रॉम द ब्रेन. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई मीन, दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आपका दिमाग सही से काम कर रहा है ना, अगर आपका ब्रेन सही से फंक्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव द सेल्स टारगेट. ऑब्वियसली बिकॉज मैं उस प्रोफेशन से हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम को रिलेटिंग दिस. बट इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रेन सही से फंक्शन करे. एंड दैट्स द रीजन वाई एंड आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल. एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट पीपल रियली नेग्लेक्ट हाउ देयर ब्रेन इज फंक्शनिंग. हम जिम जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, which is very important, by the way. That also actually helps, you know, to train your mind, to keep your brain healthy. Because obviously, अगर आप जिम में जा रहे हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो you are actually supplying more and more oxygen to your brain, which is very important. So you are indirectly training your brain. But there are a lot of practices which is important in life अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन बहुत सुपरली फंक्शन करे. And these things I have actually realized over the period of time. Not very soon, not very immediately, because I remember in my last company, when I initially joined the organization, initially I was doing really well, but there was a moment, there was a point where I was not doing well. And क्योंकि I was at the starting of my career, so I thought why not to go ahead and change the career maybe from sales to tech. But whatever be the reason it was, I thought nahin, let's give it another try. Let's give another try. Or at that point of time, actually I started reading multiple books on manifestation, how to keep yourself positive, how to train your mind, how to train your subconscious mind. And that's when I
got all these knowledge about positivity, subconscious mind, and how subconscious mind plays a very important role in your life. Actually, I would say 90 to 95% of life is actually being designed by your subconscious mind. And that's the reason why I thought कि क्यों ना, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे इतनी बुक्स पढ़ी है, इतने वीडियोस देखे हैं, सेमिनार्स थोड़े बहुत अटेंड किए हैं, तो आई रियलाइज कि चलो ठीक है, दिस इज समथिंग which I believe people are not really aware of, or maybe not people really care of. So why not to create content around this? And that's why I've decided कि ठीक है, let's go ahead and create a channel on Instagram first of all, because obviously Instagram is a place, is a platform जहाँ पे mostly हमारा Gen Z organization Gen Z organization कह रहा हूँ मैं, जो Gen Z generation है, that is mostly on there. And not just Gen Z, but millennials are also here on Instagram. So I started creating content with Instagram, and then I switched to Facebook, then now YouTube. So I thought कि it's very important to make sure that people are aware that what is the power they have, your mental power, your mind power. और ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि recently बहुत ज़्यादा around डिप्रेशन और एनजाइटी, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है. अब क्यों ना हम उसको जड़ से ही ख़त्म करें. आई नो मतलब जड़ से ख़त्म करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट क्यों ना एटलीस्ट लोगों को थोड़ा ये बताना स्टार्ट करे कि कैसे यू कैन डील विद ऑल दिस सिचुएशंस. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल. सो गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन how to keep yourself positive, how to deal with negative thoughts, how to control your thoughts, how to control overthinking. In fact, what are the better ways to do overthink, and how to manifest. लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं, how to manifest things. कई लोग इसको एक फालतू मिथ भी मानते हैं, मैं भी मानता था, बट नहीं, ये नहीं है. I mean, I have practiced all of this. So बस मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी काम की चीज़ें इसमें आने वाली है, और मैं सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं वही चीज़ें बताऊँगा जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ट्राई करी है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. Be it manifestation, be it dealing with procrastination, be it dealing with overthinking, be it dealing with negative thoughts. ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है, और मैंने इन पे कहीं ना कहीं कोशिश करी है कि मैं इनको कंट्रोल कर सकूँ, और वही ट्रिप्स एंड टेक्निक्स जो हैं मैं यहाँ पे शेयर करूँगा. सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, बिकॉज मैं कुछ काम का ही आपको बताऊँगा, फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. आई नो फॉर लॉट ऑफ पीपल ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक शायद नहीं होगा, एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट देम. व्हाट आई रियली केयर अबाउट इज फॉर दोज पीपल जो जेन्युइनली चाहते हैं कि वो अपने माइंड के पावर को एनहांस करें. सो दिस इज़ फॉर देम. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, do like, share this video, share my content with your people. By the way, I've already posted a lot of reels on Instagram. Do check them out. If you're on Facebook, you can still go through my content. It's Positive Vibes Only by Ritwik. चैनल के जो मेरे लिंक्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, पेज को फॉलो करना. और क्योंकि मैं भी रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, सो आई रियली नीड टू नो व्हाट रियली रेजोनेट विथ यू गाइज. So I would highly appreciate if there is any topic that you want me to cover especially. So आप comments में अपने वो topics मुझे बताइए, और how I can improve my content. तो really feedback is always welcomed. Thank you so much. Do subscribe the channel.